Kurukshetra hai. And with a chariot wheel? Bro. ठहरिए केशव, आपने युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने धर्म की रक्षा की भी ली है अर्जुन, पर यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मुझे तो उठाने ही होंगे। शांत हो जाए माधव, शांत। क्षमा वासुदेव, क्षमा। Yeah, lock in, Arjun. मैं वचन देता हूँ कि इसी क्षण से अपने पूरे सामर्थ्य से शत्रु का सामना करूंगा। Yeah, I thought Lord Krishna got mad. He picked up a chariot wheel from the ground and then raised it against भीष्म भी उनके Lord सामने Krishna. अपना प्रण भूल तो नहीं जाओगे? और ये भी मत भूलना अर्जुन कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। केवल मैं तय कर सकता हूँ मेरी मृत्यु। रोक पाओगे मुझे? ना प्रतिज्ञा भूलूंगा केशव, और ना अपना क्षत्रिय धर्म। Woo! That's what we were waiting for, Arjun. Damn. This episode is about Bishop. Yeah, now Arjun is locked in, bro. Woo! Bro. Day 5, okay. Damn, we're running through these days, bro. Wait, are we gonna see Bhishm's backstory? Please. When he started as... What was his name? What was his previous name? I keep forgetting. Bro. Bisham is like Aquaman, bro. He's just cooking these niggas, man. With the water. Damn. Oh, snap. Almost took out Beam. आपके 15 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं महाराज, और संभव है मेरे आने के पश्चात और भी। Damn, bro. भीम, 15 पुत्र। समाचार गांधारी को कैसे दूंगा? महाराज, कुल मिलाकर युद्ध में कौरव पक्ष ही आगे है। मुझे पता था पितामह भीष्म जो हैं वो अवश्य मेरे पुत्रों का बदला लेंगे। Please give us a flashback. विकर्ण, दुशासन, दुर्योधन, धरती पर भार। इस भार को तो मैं कम करूंगा। नकुल, सहदेव, मैं नकुल हूँ भैया। और मैं सहदेव। तुम दोनों कितने एक समान हो। तुम्हें तो युद्ध में इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे जहां देखो पितामह ही पितामह, जैसे एक नहीं 100 पितामह युद्ध कर रहे हो। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए श्री कृष्ण ने सभा बुलाई है भैया। I mean, bro, in a way, this is Bhisham's entire story. इससे तुम्हें आराम होगा दुर्योधन। Damn. Duryodhan is fucked up. लेकिन मन की टीस का क्या? कैसी टीस? What are you talking about, bro? बाल बराबर भी नहीं। Oh, but युद्ध में कतराते हैं। अर्जुन just- अपने सारथी कृष्ण की हर बात सुनता है, पर क्या तुम अपने सेनापति की केवल एक सलाह मानोगे? आज्ञा दे पितामह। आज्ञा नहीं दुर्योधन, परामर्श। संधि कर लो। इस युद्ध में किसी की विजय नहीं। मैं सेनापति होता
तो पहले ही दिन अर्जुन को खत्म कर देता Is that Karan? और युद्ध भी। डींगे मारने से It is Karan. Why does he look like Prabhas, bro? पड़ता है जो मैं कर रहा हूं। तुम मेरी Yeah, they make Karan look like Prabhas, bro. कौरवों की हार और पांडवों की विजय के बीच यदि कोई है तो वो मैं हूं। ये बात तुम भी जानते हो और पांडव भी। यदि कौरवों को हराना है तो भीष्म को मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। मत भूलो कि वो शत्रु के साथ साथ हमारे पितामह भी हैं। और पितामह के साथ साथ एक कायर Haibo, Bhim. दुर्योधन को द्रौपदी का अपमान करने से नहीं रोक पाए। उन्हें हराना तो अति आवश्यक है। Damn, I didn't know Bhim had that beef with Bhishma. केवल एक व्यक्ति बता सकता है कि पितामह भीष्म को मारना कैसे है। केवल मैं तय कर सकता हूं मेरी मृत्यु। स्वयं पितामह भीष्म। Now I'm thinking, is there gonna be an episode about Karan? Yes! Yes! Backstory, bro! Yes! Yes! Oh my goodness. But I wanna see from Bhishm's childhood, bro. This is fine. This will do. और बाबा कभी वापस नहीं This show is epic, bro. पुत्रों, जरा देखो तो तुम्हें साथ ले जाने के लिए कौन आए हैं? महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र, तुम्हारे पितामह भीष्म। Hey, Mom. Guys, I forgot Bishop's original name. It's something. Devavrat! Devavrat! मेरे 5 पांडव। सावधान पुत्रों, मैं निशस्त्र भी योद्धा हूं। पलक झपकते ही इस अवसर को बदल सकता हूं। Relax. You're not here to fight. केवल आपका कुशल पूछने आए हैं। इतनी रात हम आपका दिया वचन पूरा करवाने आए हैं। कौन सा वचन? याद रखना युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पितामह हूं। Yudhishthir. तुम्हारे परामर्श के लिए सदा उपलब्ध हूं। हम महारथी भीष्म पर विजय का मार्ग जानना चाहते हैं। मुझी से पूछते हो मुझे कैसे मारे? जाओ विश्राम करो और मुझे भी करने दो। मैं बस इतना कह सकता हूं कि पृथ्वी पर कोई नर नहीं और आकाश में कोई देव नहीं That's Aura. मुझे मार सके। That's Aura, bro. भीष्म के उत्तर में ही पांडवों की पहेली का हल था। केवल उसे समझने की आवश्यकता थी। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, संभाल मेरा वार। पहले तू स्वयं को संभाल शिखंडी। Woo! Oh! Damn. पृथ्वी पर कोई नर नहीं, तो बचा कौन? नारी। भारत के कोने कोने से आए महावीरों का राजकुमारी अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में स्वागत है। आज के इस समारोह में अब हम Yes! This is. Yes! Yes! Devavrat. वर में भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ दी क्या? Oh, he changed his name after that vow. He didn't change it after the Swayamva. क्या देख रहे हैं केशव? पितामह भीष्म की मृत्यु का मार्ग। That's crazy.
शिखंडी? शिखंडी कहो या शिखंडिनी। Right, Shikhandi was a woman, I think. I forgot. बस उपहास करते रह गए और भीष्म अम्बा, अंबिका, अम्बालिका को बलपूर्वक सबके सामने से हर ले गए। प्राचार्य भीष्म, राजकुमारी अम्बा को मुझे लौटा दे। Cooked him. चिंता ना करो कुमारी अम्बा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। What? का साया धीरे धीरे कुरुक्षेत्र पर छा रहा था और उसी साये से उभरा एक राक्षस अलम्बुश, जिसकी काली शक्तियों ने भीष्म के बाणों को और पैना कर दिया। Dudes are yelling and screaming, bro. याद है अर्जुन, कैसे तुमने एक नारी के रूप की आड़ में अपना अज्ञातवास पार किया था? इस बात का अभी क्या? आज फिर तुम्हें एक नारी की आड़ में अपने भाइयों को इस अंधकार से बाहर लाना होगा। अश्वत्थामा, तुम नहीं बचोगे। Yeah! Hey, bro. Shikhandi is not a bad warrior at all. मैंने सुना कि आप मेरे लिए चिंतित थे। लो, मैं अपना सर्वस्व छोड़कर आप ही के पास आ गई। देवी अम्मा, आप तो राजा शाल्व से प्यार करती हो। आपके कहने पर ही तो हमने राजा शाल्व को आपको लौटा दिया था। उस घमंडी को मेरे प्रेम से अधिक आपसे हार का दुख है। उसने मुझसे विवाह से मना कर दिया। मेरा अब कोई नहीं। मुझे अपनी शरण में ले ले भीष्म। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए स्नेह देखा है। देवी, आप जैसी सुंदर स्त्री का साथ मेरे लिए गर्व होगा, किंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य। मेरे इस हश्र का कारण आप है भीष्म, इसलिए अब मैं आपका दायित्व हूँ। ब्रह्मचर्य की मेरी प्रतिज्ञा अटल है देवी। मेरी विवशता को समझो। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। एक प्रतिज्ञा के लिए एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान, इस अपमान को मैं जन्मों तक याद रखूंगी भीष्म। पृथ्वी पर कोई नर नहीं और आकाश में कोई देव नहीं, जैसा आप ही ने बताया था पितामह। आपका अंत शिखंडी। Sanjay is just watching. Woo! अलम्बुश, तुम्हारे इस फैलाए हुए अंधकार को मिटाने का समय आ गया है। Is that Abhimanyu? I really am bad with the names. Oh! Damn! ये अर्जुन के बाण हैं। ये बिल्कुल नहीं चुभते। पीड़ा तो केवल अर्धचंद्र वाले ये बाण देते हैं। शिखंडी। Yo, sick transition, bro. Sick transition. महादेव के आशीर्वाद से स्थूल कर्ण ने अम्बा, एक स्त्री को पुरुष में बदल दिया। परिवर्तन के बाद भी शिखंडी भीष्म के लिए अम्बा ही रहा। असाधारण सौंदर्य
भीष्म अस्त्र कैसे उठाते? Damn, bro, then ride your horse away, you know? Nah, he just said enough is enough. भीष्म की आंखों में अब भी वो स्नेह था जो केवल अंबा ने देखा था। सेनापति को बचाओ, वो संकट में है। Woo! This is crazy. Woo! Damn. मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं। मेरी विवशता को समझो। Yeah. Yep. That's Kurukshetra episode 3. I was really hoping that we would see Bhishm's entire life, like from, because to me, like the Mahabharata is sort of his story in a way, because we see his entire life. We see a lot of people's entire lives, but like his birth is like kind of at the beginning, and his death is like at the Kurukshetra. So it feels like the whole story sort of encompasses him. I mean, he's the longest living character in the. But, you know, they just showed us him meeting the Pandavas when they were boys, which is cool. Overall, though, I'm not. I mean, yes, this story is called Kurukshetra, right? But I'm still missing a lot of the drama from the Mahabharata, from like what comes before the Kurukshetra, you know. Like I feel like we're missing out on some of the drama for the sake of like not action scenes, but like this is a very it's just missing some of that emotional depth for me. Like, yes, we are seeing the cool fight scenes. Yes, we are seeing, you know, a lot of payoffs. We are seeing a lot of the themes of the Mahabharata. Like a big theme is vows and the importance of taking vows and defending vows and saying and having something to defend with your honor and your life, you know. So yeah, we are getting a lot of themes of the Mahabharata, but you know, we're still missing some of that emotional depth for me. But then again, it would be impossible to get everything that I'm even asking for in an 18 episode, 30 minute long Netflix series, you know. So yeah, it's just impossible. So I either way, for what it's worth, for what it's doing, I appreciate. And just the animation is still to me very top notch. Like when Bhisham pulled out the arrow, and like you could see like the painted like nature of the arrow and his skin, like it's just top notch. They're doing great. Yeah, I had a good time. I wanted to see baby Bhisham, but you know, it's cool. I'll see you whenever I do the next episode, which may be months from now. Who knows? Bye.